गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लोकल फिनटेक प्लेयर्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला है कि जो फॉरेन ओन्ड फिनटेक ऐप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर चुकी हैं इंडिया में इस सेक्टर में। तो यूपीआई जो है वो लार्ज पोर्शन हमारा कैप्चर कर चुका है डिजिटल पेमेंट्स का। अगर हम बाय वॉल्यूम देखें पिछले साल के हिसाब से, तो एनपीसीआई ने ही जो है बनाया यूपीआई को। एनपीसीआई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स के लिए, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। यूपीआई तो हमें पता ही है एनपीसीआई ने ही बनाया है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में जो पावर करता है। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है इसके बारे में हम देखते हैं अब। इम्पोर्टेंस बता रहा है ये रिपोर्ट कि डिजिटल पेमेंट ऐप्स की कितनी ज़्यादा यूसेज बढ़ चुकी है। लोकल ऐप्स को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन वंस। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा हमारे लिए। और डोमिनेशन ऑफ फॉरेन ओन्ड ऐप्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। फ़ोन पे जैसे हो गया या गूगल पे हो गया, जो कि फॉरेन ओन्ड ऐप्स हैं। एनपीसीआई ने 30 पर अभी नवंबर 2020 में इवन कमेटी ने रिकमेंडेशन को इसको जो है एंडोर्स भी किया है कि जो नवंबर 2020 में एनपीसीआई ने कहा था कि 30% वॉल्यूम कैप होना चाहिए ट्रांजैक्शंस का एक पर्टिकुलर ऐप पर। मतलब फ़ोन पे अगर जो है वो टोटल जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं उसमें 30% से ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो कैप्चर नहीं कर सकता। ठीक है, इस लिमिट को जो है वो थर्ड पार्टी ऐप्स जो जैसे फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, गूगल पे, सबके लिए जो है वो लागू किया गया है। लेकिन इसके लिए एक्सटेंशन जो है वो दी गई है। ये रूल कब से लागू होगा? 31 दिसंबर 2024 से। ठीक है, तो मार्केट शेयर को कम करने के लिए जो है यूपीआई का, यूपीआई में इन ऐप्स का ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो फिनटेक कंपनीज जो है उनको कई जो स्कैमस्टर्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग पर्पसेस के लिए भी जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है ना। तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस अगर हम देखें तो इंडिया में अभी तो वो बहुत कम है, परसेंटेज सिर्फ 0.0189% है, बट फिर भी डर डर है कि आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो है कहा गया है इस कमेटी द्वारा कि फॉरेन फिनटेक फर्म्स जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ तो लाती हैं, तो इसलिए उनको आप बंद तो नहीं कर सकते या फिर उनको बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक मिक्स हमको बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड मिक्स, ताकि लोकल और फॉरेन फिनटेक प्लेयर्स दोनों ही जो है इंडियन इकोसिस्टम में थ्राइव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरेन कंजर्वेशन एक्ट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को बोला है कि जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट 1996 की जजमेंट के हिसाब से थी उसी पर ही जो है काम किया जाना चाहिए। तो एक टेम्प्रेरी ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कि जो टी एन गोदावर्मन केस में जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसी को ही फॉलो किया जाना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट अगर हम देखें अभी करंटली कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है। सितंबर 2019 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए जो है सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होंगी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। तो 1996 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था टी एन गोदावर्मन केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फॉरेस्ट वर्ड है उसको डिक्शनरी की मीनिंग के हिसाब से जो है वो अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए। तो इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जितने भी स्टेचुटरीली रिकोगनाइज फॉरेस्ट हैं, चाहे वो डेजिग्नेटेड हो, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड या अदरवाइज, वो सब जो है फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को जो एक्सट्रैक्शन की जाती है उनको रेगुलेट करने की। तो लेकिन 2023 में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई, जिसमें जो है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एक्ट को जो है अमेंड किया गया और कहा कि जो लैंड्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट थे 1980 के टाइम पर या उसके बाद, उनको ही सिर्फ जो है फॉरेस्ट माना जाएगा और ये एक्ट उन्हीं पर अप्लाई होगा। और एग्जेम्पशन क्या दी कि ये एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा जो कि 1980 से लेकर 1996 के बीच में नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए जो लैंड डाइवर्ट किए गए थे, या फिर वो फॉरेस्ट जो लैंड्स जो कि 100 किलोमीटर अवे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से, 5 से 10 हेक्टेयर्स जो है लैंड सिक्योरिटी और डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक पोस्ट बनाना, फेंसिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना, ज़ू चलाना, सफारी चलाना, इको टूरिज्म फैसिलिटी चलाना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ जो है वो कर सकती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को जो है अगर किसी प्राइवेट एंटिटी को कोई फॉरेस्ट लैंड देना है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट PIL डाली गई और गवर्नमेंट ने कहा कि हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर, ऐसा कुछ जो कि PIL में कहा जा रहा है। सेक्शन 1A जो चैलेंज किया गया उसमें जो है गवर्नमेंट ने कहा कि लैंड्स जो कि फॉरेस्ट स्टेट जो फॉरेस्ट की तरह रिकोगनाइज किए गए हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी द्वारा, लोकल बॉडी द्वारा, रिकोगनाइज कम्युनिटीज़ द्वारा, वो वैसे ही रहेंगे, हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रादर हम तो जो है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को ब्रॉडन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें अगर हम करंट जजमेंट के बारे में देखें तो फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड रहेगी एज़ पर 1996 डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जजमेंट। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो एक पूरी कंपाइल करके देंगी लिस्ट को, और जो है मार्च तक जो है वो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को बताएंगी कि कौन से फॉरेस्ट्स हैं, फॉरेस्ट लाइक एरियाज, अनक्लासिफाइड या कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड जो है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो उनको बताने पड़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो है वो बिना उनकी इजाज़त के किसी भी लैंड को या फॉरेस्ट लैंड को जू और सफारी के लिए जो है वो नहीं डाइवर्ट कर सकती। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वासार। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने क्वासार जो है वो डिटेक्ट किया है या फिर डिस्कवर किया है, जो कि अभी तक का ब्राइटेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग क्वासार है। तो क्वासार क्या होता है? एक एक्सट्रीमली एक्टिव और ल्यूमिनस टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, जो कि एक बेसिकली सुपर मासिव ब्लैक होल है और वो एक्टिवली फीड कर रहा है एट द सेंटर ऑफ अ गैलेक्सी, ठीक है। तो क्वासार जो हैं ये यूनिवर्स में बनते हैं जहाँ पर लार्ज स्केल डेंसिटी ऑफ मैटर जो है वो हायर देन एवरेज होती है। मोस्ट ल्यूमिनस, पावरफुल और वाइब्रेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनिवर्स में अभी तक नोन है। ये बनते कैसे हैं? तो इनफॉल ऑफ मैटर जो है वो ब्लैक होल में होता है। इतना ही तेज़ी से होता है ये कि बहुत सारा मटेरियल जो है वो एक बारी में ब्लैक होल में नहीं जा पाता, तो फॉर्म ऑफ क्यू बना लेता है ये पीछे, और ये स्पिरल होने लगता है, ह्यूज क्लाउड्स जो है इस मैटर के, और उससे हीट जनरेट होती है और ये डिस्क जो है, ये जो डिस्क बना लेते हैं जो ये मैटर, ये इतनी हॉट हो जाती है कि ये ब्राइटली शाइन होने लगती है। तो जो ब्राइटेस्ट क्वासार्स हैं ये जितने भी स्टार्स हैं गैलेक्सीज में उनको भी आउटशाइन कर सकते हैं, और ये बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हमारे से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडस एक्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडेक्स एक्स समिट जो है दिल्ली में वो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया और यूएस के बीच में। तो यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर इकोसिस्टम इंडस एक्स है क्या? तो इसको लॉन्च किया गया जून 2023 में, जब पीएम मोदी ने स्टेट विजिट दिया था यूएस में। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन दोनों गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया और यूएस के बीच में बढ़ाना, और हाईटेक कॉपरेशन रखना, जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ डिफेंस सेक्टर पर फोकस रखता है ये। तो जेट इंजन्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, इन्फेंट्री व्हीकल्स की जो को प्रोड्यूस करना। तो इंडिया जो है उनकी तरफ से आईटेक्स और यूएस की तरफ से ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है वो इसमें लीडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आईटेक्स क्या है? तो फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, 2018 में लॉन्च की गई, ताकि एक इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में जो है वो लाया जा सके, जिसमें कि स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, एमएसएमईज, इंक्यूबेटर्स और अकेडमियाँ पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो ये ग्रांट और सपोर्ट देता है आर&डी के लिए, जो तो उस पर्टिकुलर उस तरह के जो है टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल के लिए जो कि फ्यूचर में अडॉप्ट कर सकती है हमारी इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ओन्ड बीएसएनएल जो है उन्होंने 65,000 करोड़ का टेंडर निकाला है फेज़ 3 ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए। भारत नेट प्रोजेक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स है वर्ल्ड का। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस देना चाहता है ये प्रोजेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का सारी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स को ऑल ग्राम पंचायत में। और ये एक्सेस प्रोवाइडर्स जैसे कि मोबाइल ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, केबल टीवी ऑपरेटर्स, कंटेंट प्रोवाइडर्स को अपनी सर्विसेज लॉन्च करने के लिए, जैसे कि ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, रूरल और रिमोट इंडिया में जो है एक तरह से इनेबल करना चाहता है।
2011 से ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है BBNL, वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। फ़ेज़ 1 2011 में अप्रूव किया गया था, फ़ेज़ 2 2017 में, और जो ये थर्ड फेज़ है 2019 से 23 के बीच में चलना था। ऑफ कोर्स इसको एक्सटेंशन मिली है। इसमें फाइबर नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स तक के लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो है वो कन्वेन उसमें अपनी मीटिंग कन्वेन की है चेयरपर्सनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सेक्रेटरी के अंदर। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2019 के एक्ट के अंदर इसको बनाया गया। लाइवलीहुड इश्यूज़ से रिलेटेड जो है अवेयरनेस जनरेट करना ट्रांस कम्युनिटी में, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड सारे स्टेट्स में बनाना, यूनियन में ये सब इसका एम है। और इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो NHRC, NCW और स्टेट गवर्नमेंट्स और एक्सपर्ट्स जो कि NGOs को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इसमें होते हैं। ठीक है। सो इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं पॉलिसीज़ बनाने में, मॉनिटर करते हैं, एवेलुएट करते हैं पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट को, जो एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट को रिव्यू और कोऑर्डिनेट करते हैं, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेशन बढ़ा दी है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की नेचुरल रबर सेक्टर में बाय 23%। तो रबर बोर्ड एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है और रबर इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइसेंस इशू करता है रबर प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को, ट्रेडर्स को। एक चेयरपर्सन द्वारा हेडेड होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कोटायम में इसका हेडक्वार्टर है, केरला में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड मीटिंग हुई है अभी AITIGA जॉइंट कमेटी की, ताकि एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को जो है रिव्यू किया जाए। इसको होस्ट इंडिया ने किया। तो ये एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और एशियन के बीच में, जो 2009 में साइन हुआ था। लेकिन याद रखो ये सिर्फ गुड्स के और प्रोडक्ट्स के, फिजिकल गुड्स और प्रोडक्ट्स के को ही कवर करता है, इसमें सर्विसेज सेक्टर नहीं आता है। ठीक है। एशियन तो आपको पता ही है 1967 में बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है। और ये इसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन एस्पाइड्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली मिशन एस्पाइड्स लॉन्च किया है, ताकि अपने कमर्शियल वेसल्स को रेड सी में वो हुथी रिबेल्स से बचा सकें। तो मिशन एस्पाइड्स क्या है? एक नेवल मिशन है यूरोपियन यूनियन का, कार्गो शिप्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके रेड सी में येमन के हुथी रिबेल्स से। तो यूरोपियन वॉरशिप्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को रेड सी में भेजा जा रहा है, गल्फ ऑफ एडन के पास सराउंडिंग वाटर्स में। कब अभी तक जो है इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम जो है उन्होंने कहा है कि वो अपने शिप्स को कंट्रीब्यूशन देंगे। और एस्पाइड्स जो वेसल्स होंगे उनका ऑपरेशनल कमांड सेंटर जो है वो ग्रीक सिटी ऑफ लारीसा में होगा। तो ये मिशन ओरिजिनली तो प्लान किया जा रहा है सिर्फ 1 साल के लिए, बट इसको रिन्यू भी किया जा सकता है एज एंड व्हेन अगर रिक्वायरमेंट हो तो। रेड सी तो आपको पता ही है, सेमी क्लोज इनलेट है इंडियन ओशन में, जो कि अफ्रीका और एशिया के बीच में आता है ना। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Parliamentary Committee on Local FinTech Players. This topic is important for your governance section and also your economy section. So in the recent report of Standing Committee on Communication and Information Technology, they have expressed worries about foreign-owned FinTech apps having too much control in India. So this report has pointed out that while UPI has made up a large portion of all digital payments in terms of volume, last year, its share of total payment value was much smaller at only 6.67%. So what does this report say about existing ecosystem? So it has said that the committee has said that there is importance of regulating digital payment apps due to their increasing usage in India, and the report has also said that regulating local apps compared to foreign ones would be more practical for entities like RBI and NPCI.
And committee has noted that there has been dominance of fintech apps owned by foreign entities like PhonePe, which has been backed by Walmart, and Google Pay in the Indian fintech sector. So PhonePe currently holds the highest market share or the largest market share in terms of transaction volume, followed by Google Pay. So committee has also endorsed the NPCI's transaction volume cap, which was introduced in November 2020, whereby NPCI had said that there should be a 30% volume cap on transactions conducted through UPI by these apps. So, which means that PhonePe would not be able to capture more than 30% of the share of UPI and transactions in India. Similar for other apps also. So originally these apps were given the time period up to 31st December 2022, but now this compliance deadline has been extended to the end of 2024. The committee has also supported this regulation in the report. Okay, so what are the concerns about fraud? So fintech companies and money laundering concerns are there because the fintech companies are being exploited by scamsters in several countries for money laundering purposes. So this if this situation comes up in India also, it would become a challenge for Indian law enforcement agencies also. So currently we have fraudulent transactions at very low level in India. The percentage stands at less than 0.0015%, but still there is a scope that it may increase in future. That's why this regulation is necessary. So this, if we look at the way forward, then of course we know that foreign fintech firms excel in leveraging new technologies, so we cannot clamp down on them or over regulate them. So there is a necessity of fostering a balanced mix of local and foreign fintech players so as to serve the Indian ecosystem. Okay, so the next topic is Foreign Conservation Act. This topic is important for your environment section. So Supreme Court has told states and UTs to act as per the definition of forest, which was laid down in its 1996 judgment of T.N. Godavaram case. So Supreme Court has said that it has issued this temporary order. And if we look at the definition of forests in India, currently there is no clear-cut nationally accepted definition of forest. In fact, in September 2019, the Forest Advisory Committee observed that there cannot be any uniform criteria to define forest, which would be applicable to all forest types in all states and union territories. So that's why states have been made responsible for determining their own definition of forests. So this is the prerogative of states to define forests in their territory. Okay, so this also stemmed from the 1996 Supreme Court order in the T.N. Godavaraman case. Supreme Court had interpreted in that judgment that the word forest must be understood according to its dictionary meaning. So this description covers all statutorily recognized forest, whether they are designated as reserved, protected, or otherwise. So to deal with this issue, there is also Forest Conservation Act, which empowers the central government to regulate the extraction of forest resources. But in 2023, the act was amended and its name was also changed. So this act would only apply now to lands which are notified in any government record as forest on or after 1980. There have been exemptions also where this act would not apply. For example, if there is any notified forest land which was legally diverted between 1980 and 1996 for non-forest use, this act would not apply to that. So to all those forest lands situated 100 kilometers away from international borders and to be used for strategic projects of national importance, or to land ranging from 5 to 10 hectares for security or defense projects, this act would not apply to them also. So uh, this act would also uh, uh, this act also provides some activities which can be carried out in forests, like establishing checkposts, fencing, and bridges. This bill also allows for running zoos, safaris, and ecotourism facilities. But state governments, if they have to divert any forest land to a private entity, they require approval of the central government. So of course PILs were filed against this amendment of 2023, and so the government was there was accusation against the government that the government had used section A to uh, divert the
or dilute the definition of forests, and the government rejected these claims. It rather said that through section 1A we are rather broadening the definition of government records of forest. Okay, so if we look at this recent temporary order of Supreme Court has said that forest will continue to have a broad and all encompassing definition as per the original 1996 judgment, and states and union territories will have to undertake a comprehensive record of all lands marked as forest in government records, including forest like areas, unclassified and community forest lands. And the bench has also said that no government or authority shall proceed with the establishment of zoos or safaris without the final approval of the Supreme Court. Okay. So the next topic is quasar. This topic is important for your science and tech section. So an international team of astronomers have recently discovered quasar named J05294351, and which is the brightest and fastest growing quasar discovered so far. So quasar is basically an extremely active and luminous type of active galactic nucleus. They are nothing more than a supermassive black hole which is active and feeding at the center of a galaxy. So quasars are thought to form in regions of the universe where there is large scale density of matter which is higher than average, and they are among the most luminous, powerful, and vibrant objects known in the universe. So, how are they formed? So, when there is infall of matter into the black hole, which is so great that all the material cannot enter the black hole at the same time, they form a queue like a spiraling accretion disk, and they form a huge cloud, and which falls into this disk, which creates a shear force which twists the clouds, and it generates heat, and that's why it shines brightly. So the brightest quasars can outshine all of the stars in the galaxies, and most of the quasars have been found billions of light years away from us. So the next topic is Indus X. This topic is important for your security section. So Defense Ministry has said that Indus X summit in Delhi marks a significant milestone in collaborative efforts between India and US. So in US India Defense Accelerated Ecosystem Indus X was launched in June 2023 when the Prime Minister Modi when Prime Minister Modi visited US. So the aim is to expand strategic technology partnership and defense industrial cooperation between governments, businesses, and academic institutions of India and the US. So this focuses on advancing high-tech cooperation and fostering joint research, development, and production opportunities in the defense sector, especially for exploring possibilities of co-producing jet engines, long-range artillery, and infantry vehicles. So from India, IDEX, and from the US, Office of Secretary of Defense are leading this activities under INDESX. So what is IDEX? IDEX is a flagship scheme of Ministry of Defense which was launched in 2018 to cultivate an innovation ecosystem in defense and aerospace sector by collaborating with startups, innovators, MSMEs, incubators, and academia. Okay. So the next topic is BharatNet project. This topic is important for your economy section. So BSNL has floated 65,000 crore rupees tender for the implementation of third phase of BharatNet project, which is the one of the biggest rural telecom projects in the world. It aims to connect all gram panchayats in the country by providing them non-discriminatory access to broadband connectivity uh, to all the telecom service providers, and to enable access providers to launch various services like e-health, e-education, e-governance in rural and remote areas. It was approved in 2011 and it is being executed by a special purpose vehicle called BBNL. The first phase was approved in 2011, the second one in 2017, and currently the third phase is undergoing, under which state of the art future proof network, including fiber, are being planned in districts at block level. So the next topic is National Council for Transgender Persons. This topic is important for your social issues. So recently, National Council for Transgender Persons has convened its meeting under the chairpersonship of Secretary of Ministry of Social Justice and Empowerment. So this National Council for Transgender Persons is a statutory body constituted under the Transgender Persons Protection of Rights Act of 2019. The aim is to focus on livelihood issues and to ensure that the transgender welfare boards are established in India in all states, and it is headed by the Union Minister of Social Justice and Empowerment, who is the ex officio chairperson of this body. It is represented also by NHRC, NCW,
state governments, UTs, and experts representing NGOs. So it advises the central government on the formulation of policies. It monitors and evaluates the impact of those policies. It reviews and coordinates the activities of all departments of government, and it also redresses the grievances of transgender persons. So the next topic is Rubber Board of India. This topic is important for your economy section. So recently, Government of India has allocated the increased the allocation of for sustainable and inclusive development of natural rubber sector by 23%. Okay, so what is Rubber Board? It is a statutory organization constituted by the Rubber Act of 1947. It functions under the control of Ministry of Commerce and Industry. It is responsible for the development of rubber industry in the country. Uh, it also issues licenses to the rubber producers, manufacturers, and exporters and traders. It is headed by a chairperson who is appointed by the central government. Its headquarters is located in Kottayam, that is in Kerala. So the next topic is ASEAN India Trade in Goods Agreement. This topic is important for your international relations and your economy section. So third meeting of AITIGA Joint Committee for undertaking the review of ASEAN India Trade in Goods Agreement was hosted by India. And it is a what is this ASEAN India Trade in Goods Agreement? It is a trade deal between 10 member states of ASEAN and India. It was signed in at the 7th ASEAN Economic Ministers India consultations in Bangkok, Thailand in 2009. So it came into effect in 2010, and it is also referred to as the Free Trade Agreement between India and ASEAN. But remember, this covers only the trade in physical goods and products, and it does not apply to trade in services. Okay, so ASEAN and India signed a separate ASEAN India Trade in Services Agreement in 2014. So what is ASEAN? It is a group of association of Southeast Asian nations which was established in 1967 from the signing of Bangkok Declaration. Currently it has 10 member states: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, Cambodia, and Vietnam. Okay, so the next topic is Mission Aspides. This topic is important for your security section. So Union has recently launched the Mission Aspides to protect commercial vessels in the Red Sea from attacks by Iran-backed Houthi rebels. So what is Mission Aspides? It is a European Union naval mission to protect cargo ships in the Red Sea from Houthi rebels attacks. So under this mission, European warships and airborne early warning systems will be sent to the Red Sea, Gulf of Aden, and surrounding waters. So far, France, Germany, Italy, and Belgium have said that they plan to contribute ships, and these vessels will be having their operational command center in the Greek city of Larissa. And the mission is being planned for 1 year, but of course, it may be renewed in case the need arises. So, what is Red Sea? It is a semi enclosed inlet in the Indian Ocean between continents of Africa and Asia. It is one of the world's warmest seas. Okay, so it has Yemen and Saudi Arabia uh, to the east. It is bordered by Egypt also to the north and west, and by Sudan, Eritrea, and Djibouti to the west. Okay, so some of the well-known islands in the Red Sea include Tiran Island, which is located near the mouth of Gulf of Aqaba, and Shadwan Island, which is located at the entrance of Gulf of Suez. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.